That moment has already come at your doorstep. Now it is time to unthink, think, and rethink how to reach to your destination. Students, you know, success is not a destination, it is a journey. It will continue throughout life. But for your board exams, upcoming board exams, I wish that all of you will excel in the exam as well as in your life too. I quote here to remind you the quote of Swami Vivekananda, "Arise, awake, stop not till you reach." Thank you all. Best of luck. Hello, my dear student. After a long journey in your school life, you are going to appear the annual board exam of CBSE. Our best wishes to all of you, from all the teachers and from the students of our school. One thing always remember, that this school life will never come again. So what you have done here, you play, you fun, you enjoy your life, but after this 10th board examination, you will not get these things again and again. So you spend a disciplined life here, but after that you will go to several colleges, you will leave the town and you will study somewhere else. But never forget always this disciplined life, which will give you a success in your life always. Thank you and best wishes from Vikas Valley Vidyalaya Balangir. Thank you, my dear student. Hey everyone, let's take some reviews for class 10 from our teachers. Let's start with Arkela sir. How are you, sir? Hi, ma'am. Namaste, ma'am. Namaste, sir. I'm also fine. Can you say something about our class 10 students? Class 10 students. Okay, thank you. Actually, class 10 students, they are very close to me. And this is a very nice batch. And I have a huge expectation from them. And in the beginning, there was no unity in this classroom, but later on, they showed the unity. So this is a nice batch. And I'll be proud for them. And there is a huge expectation about their academic performance. Thank you very much, sir. Let's take some review from our beloved Devashish sir. Please, sir. Thank you, ma'am. Actually, about what I have to speak? About our class 10 students. Okay, they are really amazing. Class 10 students. After some days, they are just going to leave us. And we are going to give them farewell tomorrow, I think. Yes? Yes. Tomorrow. Actually, it's not the farewell, it's our Yes. ceremony. Blessing ceremony. Teaching the class 10 student, mainly this batch, it was really amazing and wonderful. The students are also very creative, little mischievous also. That's why they said them. Yes, they never fail to appreciate, never fail to encourage, never fail to make yourself proud. Actually, sometimes they never fail to disappoint. That's happened. Really, it's a wonderful batch to whom we are going to miss too much. Their creativity, that's always placing them into a new height. I think they are all contented, and I want to just give them, wish them all the best. Dear students, best of luck and all the best for your all future endeavor. And be prepare well, learn some time management, and make yourself prepare that much that you will get a good achievement in this class 10 board. Thank you, ma'am.
थैंक यू सो मच सर। अब चलते हैं थोड़ा हमारे विवेक सर के पास, उनकी फीलिंग्स क्या है 10th के लिए। प्लीज सर शेयर योर फीलिंग्स। सबसे पहले तो सबको ऑल द बेस्ट, क्योंकि वो अपना 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। और मेरा भी ये पहला एक्सपीरियंस है, जिनको मैंने पहला बैच है जिनको मैंने 10th एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाया, और इन्हीं से बहुत सारे आशाएं हैं मेरा कि ये लोग बहुत अच्छा मार्क लाएंगे, 90 अबव% लाएंगे। और पहला बैच होने के नाते मेरा पहला बैच है 10th का, जिनको मैंने प्रिपेयर किया, इसीलिए इन लोगों को मैं हमेशा याद भी रखूंगा और बहुत मिस भी करूंगा। और इन द एंड सबको ऑल द बेस्ट, और मेरा आशा है कि सब अच्छा मार्क लाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। It's time for taking the review from our Vinay sir. Sir, please share your feelings towards our class 10 students. Yeah, ma'am. Actually, this batch is also very nice batch because they are also very creative and they have also so many type of talents that whenever they also go for the classes, at that time I observed that they are also implement their own knowledge. They also express their things in a very well manner. Yeah. And actually, according to my experiences, in my previous tuition, I didn't see anything about the students like that. So basically, I also enjoy the classes with that guy, and I hope that they will also do their best, and they also secure the more than the 95 and the 98% in the board examination. So thank you, and all the best, students. Thank you sir. Thank you very much. हेलो, हाउ आर यू ऑल? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग सारे अब 10th का बोर्ड एग्जाम अपियर करने जा रहे हो। आपको मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो, और हमेशा आप एग्जाम के समय टाइम मैनेजमेंट हमेशा प्रेफर करना। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हमेशा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना, और रीचेकिंग, जब आपका एग्जाम पेपर खत्म हो जाता है तब आप उसको एक बार रीचेक करना नहीं भूलना, और कुछ भी आप बाय मिस्टेक भी कुछ छोड़े हो तो उसे कवर अप करना। सब कुछ आपके हाथ पे है, टाइम अच्छे से बस मैनेज करो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे ब्यूटीफुल गर्ल्स और मेरे हैंडसम बॉयज हमेशा बेटर ही करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। Namaste, this is Medha Ratnam, and today we will know about the students, the junior students, what they are feeling, because after some days, class 10th seniors, they are going to attend their final exam, and they will leave the school after this. So let's see what the juniors are feeling about them, what are the experience they have shared with each other. नमस्ते, मेरा नाम अद्विता रानी साहू है। मैं क्लास 10th भैया दीदी लोग को बहुत मिस करूंगी। मैं उनके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ। थैंक यू। नमस्ते। जो हमारे 10th क्लास के सीनियर्स थे वो हमें बहुत प्यार करते थे, हम उनके साथ खेलते थे। उनका जो एग्जाम आने वाला है, इसीलिए मैं उन्हें ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। मैं उन्हें बहुत मिस करूँगा। नमस्ते। 10th वाले भैया दीदी लोगों को सबसे पहले मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगी उनके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। हम सभी को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, वो लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे। वो लोग एज अ सीनियर हमें बहुत ज्यादा गाइड करते थे, हम उनका गाइडेंस बहुत ज्यादा मिस करेंगे। थैंक यू। नमस्ते मैम, I am Shailaja Mishra from class 5. Today I am going to share the experience from class 10th. They guide us much they can. They are much friendly to us. I have much experience from them. They are so friendly, and I miss them. I miss them so much, and best of luck for their exam. Namaste everyone.
myself Satatya Kumar Chavdar of grade 6. I am here to speak about our 10 student, means our elder brothers who are going to give their farewell exam and not come to school after their exams. So we will miss them, and they are very friendly to us. Thank you. Have a nice day. नमस्ते। क्लास 10th बैच अभी फरवरी में उनका एग्जाम है, वो जल्दी ही चले जाएंगे। बहुत अच्छे बैच थे क्योंकि वो हमें बहुत हेल्प करते थे। हमारा कोई भी अगर प्रॉब्लम होता था या फिर कोई भी डाउट होता था तो उसको वो सॉल्व करते थे, उसमें हम लोगों को हेल्प करते थे। अभी उनका एग्जाम होगा, वो लोग चले जाएंगे, पर हमें ये वाला जो बैच था वो हमेशा याद रहेगा क्योंकि वो बहुत अच्छे बैच थे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। So, what you are feeling because your class 10 seniors are going from here after their farewell? What you will say about them? So, एग्जाम्स जो खत्म, अभी एग्जाम्स होंगे, उसके बाद एग्जाम खत्म होगा, फिर जो फेयरवेल के बाद वो लोग हमारे साथ और नहीं रहेंगे, मतलब स्कूल और नहीं पढ़ेंगे, तो उनके साथ जो मेमोरीज बना था, उनके साथ जो वो फ्रेंडशिपनेस था, वो सारे को हम लोग बहुत याद करेंगे। उनको भी बहुत याद आएगा, और जो उन्होंने हमें गाइड किया था उतने सालों तक, तो वो भी सारा बहुत हम लोग याद करेंगे। Okay, so what you will say, guys? Namaste. It is very hard to express what we are feeling now. A wonderful journey that have started with our lovable and caring brothers and sisters. The way they have been teaching us, guiding us, inspiring us would be inspire us throughout our life. At last, we want to tell that all the best bhaias and ladies for your exams. नमस्ते, मुई सुश्री। मुई आज आमर क्लास 10th रो बड़ दादा और दीदी मान को ले किछि कहबा ले जाउछे। क्लास 10th रो हमको बहुत इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिली जे। से माने हमको सिखेछन केनता कि ना हमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करमु और मैनेजमेंट केनता कि ना करा जायसी। से माने मते एकेडमिक रे भी बहुत हेल्प करसन। से मान को देखले मते गुटे निजर भितर गुटे बहुत बढ़िया इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलसी। से माने हमको हमर पढ़ा रे कहनी पर्सनल सब्जेक्ट रे किछि पर्सनल डाउट हले भी हमको एटा क्लियर करसन। तो आज से माने जेते बेले हमर स्कूल छाडी के ना जाउछन, हेटा गुटे बहुत बड़ फीलिंग टा आसुचे कि समाने नहीं जिबार कथा। बाकी समाने गला बेले भी हमको बहुत किछि सिखेई कि ना जाउछन। हमर गलती जेते बेले भी होतला हमको समाने गाइड करिछन, गाली नहीं दे कि ना हेटा के सुधरावल ले कहिछन। लास्ट रे में एकी कहबा ले चाहमी कि हमर क्लास 10th रो बैच रो दादा और दीदी माने सबको नु बेस्ट है। थैंक यू।